are good to go. I think we have enough decent Sure, audience. sure, sure, sure. So, Shakusa, would you like to go first? Okay, fine. I don't mind. So I think Fahad Saab can, help me out in between. We can make it in a more like a conversation between two entrepreneurs. So which will make it Whichever, more interesting, I believe, for the students. whichever way you decide, whichever way you decide. Okay, Fahad Sure. Saab, I think that will be very, more fruitful for the audience. Yeah. If we can just have a mutual interaction. And let me just first give a small, about the topic that we're meeting today. So मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँ कि as a entrepreneurship के जो phases हैं, when you try to figure out कि what are the phases that is mandatorily one has to go through if someone is willing to become an entrepreneur or become a job giver rather than job seeker. So there are two different things. So when you plan to give job for others, first you have to get a job for yourself within your own organization. That's very important. As per Warren Buffett, that's the one of the biggest mistake entrepreneurs does. They don't just take salaries and remuneration proper for themselves. They try to calculate this at the last, but it has been noted as one of the failure model of entrepreneurship. Unless if the business does not able to sustain you, it cannot sustain others. That's very important that you sustain yourself first within your entrepreneurship journey. So if you are able to sustain, automatically you can put in more pressure on yourself. You can take more responsibilities and become a part of a big family. That's how the family grows basically. So you have to feed yourself first. That's very important. At the very first, I think that the first step, the first concern should one entrepreneur should have actually. Okay, how I can reach the break even as soon as possible. And as we all know, okay, entrepreneurship is a multitasking job. It is not a one direction job. So the how we prepare ourselves to do multitasking is very important and very crucial. So the quicker and the earlier you start doing and practicing things, so that's better always for an entrepreneur to have a successful journey. तो कहते हैं ना कि जितना जल्दी आप शुरू करो, आई थिंक फहाद साहब इज अ क्लासिकल एग्जांपल फॉर अस कि he started as an entrepreneur. He's a third generation. I know him personally, so he is a third generation entrepreneurship in his business ventures. So he has definitely, as an individual, he has grown up a lot in multiple directions. But as a entrepreneur, he had started at a very young age, as I can recall. Maybe during school days only he started seeing things, how business runs and all those things. So that is, I think that we can see by at his age what he has achieved is no doubt is one of the inspiration for many people to follow, especially the young minds in Jamia and people who are having today in our session. So I would definitely try to dig some past experience of Asaf, how as a young mind, how he used to think, because today we are dealing with the audience who are young. So, and they are aspirants and they are looking for entrepreneurship. So it's very important to let them know how we have overcome those entrepreneurship journey. I'll try to share mine also, as it's a coincidence. Even in my case also, I am a third generation entrepreneur. So that's how it has been a coincidence between me and Fasab. So let's see, okay, how we can share the thing, and in between, if anyone has to ask anything, please feel free, because I don't see have a dedicated question answer session, because the time is quite short. So we have just 1 hour session. So in that, I think it will be more beneficial if people can be a part of the whole conversation, and they can raise their queries in between also. Just raise the hand, so we'll know who is asking and what. And if the coordinator, I think Shiraz Saab is there or Khalid is there, so if they can also coordinate us, and if let us know if somebody is raising the hand. And you can also, I think, message also during the conversation if you want to have asked something. So you can type the questions. So me and Fadai will try to pick them up and during our conversation and try to address them as well. So let's make it in a more robust kind of conversation. क्या कहते हैं फासा, सही है? It definitely should be a more interactive session. I think lectures तो आदमी सुनता ही रहता है, बहुत ज्यादा सुनता है, बहुत ज्यादा। संडे में फात भाई लेक्चर को किसको मजा आएगा? जब तक इंटरेक्शन ना हो तब तक मजा नहीं आता। और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली अबाउट
listening to lectures. It is more about inculcating the entire ideology about thinking ideology. जाहिर सी बात है, आज खूबसूरत दिन है, खूबसूरत धूप निकली हुई है, एंड आई एम श्योर people are observing, or people they definitely should start the day with thanks to the Almighty. तो इस तरीके से सफर शुरू करते हैं। जो एक जी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है जाम्बिया सेशन में। नहीं, जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, आई थिंक उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट ही ऑब्जर्व्स कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हिम। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जब तक वो नहीं हो सकता until and unless he is observing things, his whole strategy has to be, he has to inculcate the skill of making money from nothing. Absolutely, he looks for opportunities and he sees money there, he sees opportunities there, he sees ideas there. थोड़ी सी चीज़ के अंदर भी आइडियाज दिखने चाहिए। सिर्फ थ्योरी, जहाँ तक ताल्लुक है इंडियन इंस्टीट्यूट्स का, जो कि अब काफ़ी चेंजेस होने लगे हैं, और इंडियन प्रोग्राम्स का जो काफ़ी चेंजेस होने लगे हैं। एक बहुत अच्छा चेंज उसके अंदर ये आगे लगा है कि अपार्ट फ्रॉम सीइंग थ्योरी बेस्ड lectures or theory based studies, they are more now into practical things. Their thinking is changing. जाहिर सी बात है, आइडियाज जो हैं they do not come out completely formed. कोई आदमी कोई चीज सोचता है, it does not come out completely formed. वो हल्के हल्के they become clear, they become more clear when you work on them. You just have to start, या इट्स वेरी ऑब्वियस जो फाज साहब जो कह रहे हैं। आई होप जो जितने भी ऑडियंस है हमारे, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि ये बहुत जरूरी है कि है ना कि आप अपने विजन में क्लैरिटी लाए, एंड द मोर फोकस्ड यू आर कि लाइक व्हाट यू आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू, तो वो आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा ऑब्जर्व करने में भी। Right. The mindset. मैं फास्ट आपको थोड़ा सा माजरा चाहता हूँ, एक छोटा सा, मुझे जो कि as I have been with these young minds for quite some time on a regular basis as a visiting faculty, तो मुझे जो लगता है, जो सबसे बड़ा जो ऑनेस्टली जो मैंने जो फील किया है, तो मैं फाद भाई आपको भी चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा इंसाइट देना। व्हाट आई सॉ देम की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जैसा भी आपने बहुत अच्छा कहा कि ऑब्जर्विंग, तो विच इज द वेरी की एसेंशियल पार्ट ऑफ अ एंटरप्रेन्योर जर्नी, राइट। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ऑफ लेट चेंजेस हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी चीजें हो रही हैं, बट इट्स वी आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। लेकिन जो ऑलरेडी बच्चे जो माइंडसेट लेके आ चुके हैं इस स्टेज तक, जो आज हमारे रूम में एज ए ऑडियंस हैं, इनके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। सबसे बड़ी चीज उनको लगता है कि सीइंग इज ऑब्जर्विंग, बट इट इज नॉट। And I hope Fahad bhai can give more clarity to the difference between seeing and observing. Absolutely. ये अगर आप थोड़ा सा अगर आप clarify करें बच्चों को with some example, I think that's very very important for them. How to observe. It is very much same like collecting information and having knowledge. एक बहुत अच्छा example मुझे याद आया, a ship was standing and it was not starting. तो top most engineers were called out कि भाई ये शिप स्टार्ट नहीं हो रही, और सबने अपने तरीके से उसको स्टार्ट करना चाहा लेकिन नहीं हो पाई। तो पता चला कि एक बड़े मियाँ रहते हैं बाय द शोर, बाय द सी, एंड मे बी उनको ट्राई कर लेना चाहिए। तो उन बड़े मियाँ को बुला के शिप दिखाते हैं कि भाई प्लीज गेट द शिप स्टार्टेड। तो ही अपना थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन ही नॉक्स विद हिज हैमर एट वन प्लेस एंड द शिप एक्चुअली स्टार्ट्स। तो अब ये लोग सोचते हैं भाई इनको क्या दिया जाए। बोले अच्छा छोड़िए, इनसे पूछ लेते हैं क्या दिया जाए, जो ये कहेंगे उनको वही दे देंगे। तो ही सेंड्स द बिल ऑफ $10,000। तो ये लोग सारे हैरान कि एक बड़े मियाँ ने एक हैमर मारने के $10,000 ले रहे हैं एक जगह पे। तो ऐसा करते हैं कि दीज आर ऑल स्मार्ट पीपल, और उनसे कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, इनसे कहते हैं आइटमाइज बिलिंग भेजेंगे, ब्रेकअप्स दे दीजिए जरा इसके $10,000 के। दे आर ऑल्सो स्ट्रीट स्मार्ट। जाहिर सी बात है, बड़े मियाँ मंजे हुए और खूब विद ऑल एक्सपीरियंस, ही सेज कि नॉक करने के $1 एंड नोइंग वेयर टू नॉक इज $9,999। सो तुमको पता चलता है कि कहाँ पे नॉक करना है। दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। आई एम श्योर देयर वर मोर बेटर इंजीनियर्स at hand on that ship, but they do not have the knowledge of where to knock. So it is all about knowledge. It is all about applying knowledge. It is all about gaining wisdom. It is all about observing things
कि आप कहाँ पे कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं या कितना क्या कर रहे हैं, दैट मेक्स यू द मनी एट द एंड, or that makes you successful, or that makes you actually valuable. Out of all these people with all the degrees, the one who is valuable is actually the one who can impact them at the end. Yeah, who Right? applies the knowledge. Is application of knowledge is more important than just acquiring the knowledge. तो एंटरप्रेन्योर में और एक जो नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सन जो होता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का जो मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही यही है कि knowledge is there for with everyone and anyone can acquire it by some efforts, but end of the day how to apply that knowledge and convert a problem into a solution, that is an opportunity, and a problem into an opportunity, that is actually where this mindset is very much important. So the seeing and observing is very important. The abhi jinhone classical example diya, it's a very classical real time incident actually. I do remember, it's a shipping corporation. We had case study, we had it, and that bill is a proof there is available. The copy that when he mentioned, the mechanic, the local Yeah. mechanic who mentioned it. सो इट्स अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल. उसमें होता क्या है कि द शिप में जितने भी लोग थे वो क्वालिफाइड थे, सब कुछ था उनके पास, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं थी उनके पास. दे न्यू ईच एंड एवरी पार्ट व्हाट इज देयर इन द शिप. बट राइट, जो एप्लीकेशन है कि भाई हाउ इट इज रोटेटिंग, और रोटेट में कहाँ कितना घिस जा रहा है, कितना घट जाता है, कितने टाइम से चलने पे कहाँ क्या इफेक्टिवनेस आता है, कहाँ उसका एनर्जी लॉस होता है, कहाँ वो ग्रीसिंग कम हो जाता है, वेयर इट हैपेंस, वो जो सारी चीजें जो प्रैक्टिकलिटी है, तो दैट प्रैक्टिकलिटी का भाई इट कम्स आउट मोस्टली विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. तो फाद भाई भी समझ एग्री करेंगे इस बात से कि हमने जब 20-25 साल की एज में जब हमने बिजनेस को देखना शुरू किया था अपने ओल्ड एज में, तो ही इज आल्सो अ फैमिली बिजनेस पर्सन, तो मेरा भी फैमिली, तो व्हेन वी सॉ यूज्ड टू सी दैट बिजनेस, जब आंखें खोल के हमने देखा क्या कारोबार हो रहा है, घर से फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं फर्म में, अपने अपने ठीक है शॉप में, बिजनेस में, जहां पर भी तो जा रहे हैं, और डे एंड में आते हैं, फिर ठीक है भाई आज क्या हुआ, कितना धंधा हुआ, क्या है, ऑल दोस बेसिक कैलकुलेशन थिंग हैपेंस एंड ऑल, एंड यू ग्रो अप विद ऑल दोस कन्वर्सेशन. तो लेकिन एंड ऑफ द डे वो इट्स अ काइंड ऑफ नॉलेज वी वर एक्वायरिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे साथ तो यही हुआ है, तो आई एक्वायर्ड दैट नॉलेज. बट when it comes to doing it myself, जब मैंने पहला एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई जस्ट आर्ग्यूड, इंडिया में उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया, तो देयर वाज नो कंसेप्ट कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया. उस टाइम तक कन्वेंशनल मार्केटिंग एग्जिस्ट करता था पूरी इंडिया में. आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन अर्ली 90s काइंड ऑफ थिंग. तो हार्डली पीपल नो इवन हाउ इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस दैट कंसेप्ट इन इंडिया. There's a family, business family called Modi Group. I hope we all know the Modi Tires, Modi Continental, and all this. The hotels and all. They have a big. So I do remember. That was a very transition thing that happened. As an individual to a real time incident that I happened. So उन्होंने इंडिया में, they are the one, Hitesh Modi. In that time he was the the family business Modi Group में उनका भी चल रहा था. बहुत सारे board members थे, बहुत सारे लोग थे. Hitesh Modi was the one जिसने अमली से अलग जाके he said I'll try to innovate something and try to bring something new. They were very innovating company. The innovation is very important in entrepreneurship. तो उन्होंने innovate किया, and he said कि I'll introduce a parallel marketing concept in India which is not there in India. तो तब तक इंडिया में भाई ना एमवे आया था ना कुछ था, there was nothing was there. So he himself, I saw, being such a already established family business empire he was having. Modi Group was quite a big group that time. तो अब मतलब आप सोचो कि अमिताभ बच्चन अपनी बेटी दे रही है, तो वो फैमिली कितनी बड़ी होगी उस टाइम में, है ना. तो they were all Escort and Modi, they were all very related families and all. तो उन्होंने क्या किया, हितेश मोदी सेठ की ओके फैमिली में सबने कहा कि ठीक है भाई करो, लेकिन भाई we will not be there with you, it is your journey. So he said okay fine, entrepreneur has to take a call sometime, it is my journey. So he took that challenge, and he individually he came out of the family business and he introduced a concept called Modi Care in India. तो अब मेरा भी भाई फैमिली वाइज वो सिचुएशन चल रहा था कि आई वाज अलाउड टू डू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेट, फैमिली तो जो चल रही थी चल ही रही थी, अंकल्स एंड पेरेंट्स वर देयर टेकिंग केयर. तो मैं बोला भाई एज अ स्टूडेंट आई सेड कि भाई मेरा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या करूं. मैंने भाई मुझे तो रियल बिजनेस ही करना है, आई कांट डू दैट एनी अदर एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड ऑल. वो मेरे दिमाग में नहीं आया कि हाउ टू डू दैट. तो आई टुक दैट चैलेंज एंड आई जॉइंड दैट कंसेप्ट.
I didn't join any company or group. I joined that concept basically to understand what it means. It's some radical thought, because that time it was a radical thought. तो मैं जब हितेश मोदी से luckily I got, because I was a very among the first few hundreds in all over India who showed courage and said कि okay, we'll try our best to see what can be done. So Calcutta में there was a meeting in Kala Mandir, and then Hitesh Modi came up, and I was joined by him only, introduce किया, सब कुछ किया. And trust me, जब मैंने practical apply करना शुरू किया ना, the first setback that I got is that कि I realized कि boss, there are so many things to learn. I don't know even कि how to deal absolutely unknown person, unknown crowd, and convert them, pull them to your concept first, then convince them to your idea, then make them buy your concept, and at the same time you buy your product as well eventually. तो वो जो एक अपने आप में एक जर्नी है ना, वो जब तक आप खुद नहीं करोगे, trust me, even if you belong to a business family, it does not help very much. थोड़ा leverage मिलता है because you know the basic fundamentals of business, calculations थोड़े easy होते हैं आपके लिए, but end of the day it is a real time journey. Unless you do it, you won't get it. Pass up. Absolutely. One of the most important characteristics for entrepreneur definitely is risk-taking capacity, or let's say it is being fearless of upcoming problems. It is very, very important. Let me tell you a little in detail. In today's competitive, right, and ever-changing economy, as an entrepreneur, we have to keep fighting, and we should be more of a problem solver. Being an entrepreneur is not easy, right? It takes determination, it takes patience, it takes perseverance, it takes a lot of qualities to become an entrepreneur. People have a lot of good business ideas. बहुत शानदार ideas आते हैं, शानदार themes आते हैं, knowledge, absolutely stunning knowledge, but they are not a good implementer. They are not a good problem solver. So people who are not a good implementer, again, it will be quite difficult for them to survive. No matter which hurdle comes your way, entrepreneurs should be more focused. They have to be more focused. They have to be more aligned toward crushing all the hurdles, toward focusing on the goals, toward being more successful, towards overcoming all the problems. Entrepreneurs सबसे ज़्यादा successful कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे problems होती हैं, and they come up with an idea which solves the problem, right? That is the juice. That is the ultimate thing for a successful person. He sees the problem and he solves the problem, right? तो आज मेरा इरादा था कि मैं तो पर्सनली कम बोलूं और मैं ज़्यादा सुनूं, क्योंकि सुनने को तो इन लोगों के पास बहुत है और बोलने को कम होता है. तो आई थिंक अगेन I would personally emphasize कि you ask questions, you discuss things. You ask a question, you become a fool for a minute. You don't ask a question, you become a fool for a lifetime, basically, right? So just open your hearts, ask whatever you want to, discuss whatever you want to. We are not perfect, we are not good, but definitely having a discussion mode, और जब आप discussion करेंगे, I'm sure by the time you leave from here, you will be a point up. Definitely, inshallah. तो शकूर साहब क्या कहते हैं आप? Let's start. बिल्कुल. I think we should start the conversation. I think some MCARs, PGDMD. Who is this guy? Somebody, can you just open up your camera and mic? Yeah. So I'll add on to what Fawad Saab has told. Mm-hmm. This so I have this thing. I personally I feel that like ये शिप वाला जो उनका एग्जांपल दिया है इन्होंने, और इसमें एक चीज है कि वहां पर उन्होंने एक मियाँ साहब को देखा और उनको बोला कि ठीक है भाई, ये इंसान शायद सही कर सकता है, और वो शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास वहां पर जो ऑन साइट ऑन ग्राउंड जो इंजीनियर्स थे या जो भी डिसीजन मेकर्स थे, उनके पास ये फ्रीडम था कि वो किसी को भी जो कि वहीं पर का लोकल है इमीडिएटली ये डिसीजन ले सकता है कि ठीक है आप आइए और हमारे शिप को आप सही कर दीजिए, ठीक है? Right. तो ये यहाँ पर ये डिसीजन लेने की जो पावर है कि मतलब फ्रीडम होना कि ऑन ग्राउंड उसी टाइम जब आप काम कर रहे हो कि आप किसी को बुलाते हो, आपको चैलेंज, आप प्रॉब्लम देखते हो, आपको उसी टाइम सॉल्व करना है,
अब Absolutely. ये वाली चीजें वहीं पॉसिबल हो सकती हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये फ्रीडम देने की और इस बात को समझने का हो कि भाई ये चीज बनानी है या करना है, और इसके लिए इमीडिएट फ्रीडम चाहिए। अगर इसमें एक बहुत बड़ा लूपिंग होगा ना कि ठीक है भाई अब हमारे को ये करना है, अब वहां पर वो इंसान बैठा है वो कर सकता है, लेकिन अब उस इंसान से हम करवा सकते हैं या नहीं, उसके लिए पहले पेपर वर्क चलेगा लंबा चौड़ा। उतनी देर में तो वो मियाँ साहब भाग जाएंगे और वो कभी भी सही नहीं होगा। तो वो वाली चीज जो मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, नहीं, आपने बहुत बहुत बड़ी सही किया। प्रैक्टिकल। आई रिमेम्बर हम्म देयर इज अ रिसेंट इंसिडेंट इन अ रियल शिप जो बॉम्बे में, अगर आपको सबको याद हो कि हम्म इवेंचुअली दैट टाइम आई वाज इन बॉम्बे ओनली, तो एक वो फोटोग्राफ मेरा भी उसके मेमोरी में है। तो एक बड़ी शिप जो है वो सी शोर में आ गया था, जूहू बीच के हम्म पास वहां पर, एंड इट रिमेन स्टक दैट शिप हम्म इन दैट जो बीच है वहां पर बॉम्बे में ही, तो फॉर मंथ्स इवन हम्म देयर वाज नो सॉल्यूशन कि इसको हम वापस समुद्र में लेके कैसे जाए। इवन देयर वाज टॉक्स कि भाई डिसमेंटल कर लिया जाए, यू नो। एंड वही डिसीजन मेकिंग जो आपने कहा, बहुत राइटली सेड कि मोर पावर हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड तो कम मुझे ये लगता है कि जैसे एक अकेला इंसान अगर घर से बैठ के उसको कोई चीज नई बनानी है तो शायद उसके लिए ये पॉसिबल है, या वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या अपनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन जब वो एक खासकर जब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो बनाना भी चाहेगा, क्योंकि एक आप एक छोटा, अब आप कुछ बना रहे हैं, बनाते हुए आपके दिमाग में आया भाई ये चीज नहीं काम कर रही, मुझे वो चाहिए, मुझे वो टेस्ट करना है। अब वो जो भी ए बी सी जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के लिए आपका पेपर वर्क कितना लंबा हो जाएगा अप्रूवल्स की, वो उसका मायने ही खत्म हो जाते हैं उतने हाँ, टाइम में। तो जब तक ये हाँ, एक पर्सनल मेरी फीलिंग है, जब तक उस चीज को स्मूथ ना किया जाए और ये भरोसा काम करने वाले पे ना डाला जाए, रादर देन हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे भरोसा डालें, हम उस काम करने वाले को इतनी इजाजत दें कि भाई ठीक है यार तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास ये ग्रांट है, तुम ये करना चाहते हो, आपको जो जो लेना है आप इमिजिएटली लो, आपको किसी लूप में ये लंबे चौड़े सिस्टम से नहीं चलना है। जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हम लोग बहुत चीजें बना नहीं पाते, और वही सेम इंसान अगर किसी बाहर के देश में होता है तो वो बहुत कुछ बना लेता है। तो right. ये वाले हर्डल को, अब इस हर्डल को एज ए स्टूडेंट लेवल या इंजीनियरिंग लेवल जो करना चाहता है उसके बजाय ये हर्डल हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे खत्म करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे Yeah, खत्म करना पड़ेगा, तब ना तभी well, हो पाएगा। points well taken. I think ये आपने एक जो डायरेक्शन दिया है, I think we all are here because that direction has been taken. At least जो जामिया एज अ इदारा है, सेंटर फॉर इनोवेशन है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, the entire organization is working toward that goal only. और तभी आपको ये चीजें होती हुई दिख रही, तभी आप और हम ये इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। तो होपफुली थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि यहाँ तो कम से कम चीजें होंगी एंड विल टेक दैट। आई थिंक जो Director ma'am is already here, who is also eventually the president of the Institution Innovation Council of Jamia. So right. we are hopeful that things will definitely turn up, at least in our case. uh, So can, I think can we मतलब 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 मैं like ये कहूंगा what you कि आई, या प्लीज फवाद साहब आप बोलिए। what you said is absolutely true, and there is a lot of delays and there is a lot of red tapeism also. But the example, the sole example जो मैंने आपको दिया, that और जो आपने उसको रिवर्ट किया, जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, that we are talking about an organizational structure, that we are talking about the management level. The example what I have given you was about the implementation of knowledge. So I mean there could be a एक चीज, एक सिनेरियो के काफी चीजें होती हैं, एक मैनेजमेंट लेवल भी हो गया, स्ट्रक्चर लेवल भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज भी हो गई, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी हो गई, you have different things. तो what you are talking about is an organizational structure, and what you are talking about is about the administrative level, which is fairly true. और काफी लोग इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते क्योंकि ये चीजें आती हैं। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग. For example, Jack Ma, an English teacher, making Alibaba, no prior experience, nothing, going into an entirely new field, getting rejected by even McDonald's, getting rejected at another 20 places. But again, risk taking capacity. So, as an entrepreneur, जब तक
रिस्क नहीं लेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने बताया डिसीजन मेकिंग है, तो जो टॉप सीईओज होते हैं, व्हाई डू दे गेट टॉप पेड? It is not because they have more knowledge. It is because of their decision making capacity. They are not getting paid just to come and sit and take do good this thing orders. They are paid because they can take good decisions. A good pilot is not paid because he can fly very nice. He उसको टॉप पायलट इसलिए टॉप का होता है क्योंकि एट डेंजरस पॉइंट्स he has the ability to take that decision जब सबकी लाइफ रिस्क में है. दैट इज हाउ इट इज जज्ड, राइट? तो एक जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या फिर डिसीजन मेकिंग है हमारी, दैट इज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जैसे आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग डिलेज की वजह से बहुत चीज़ें पीछे रह जाती हैं, दैट इज अगेन अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर. और I completely agree with Fahd bhai. Actually, we are trying to more, not on the organizational structure. Maybe someday when we'll have a topic like that, we'll try to, explore that area as well. How entrepreneurs should plan the kind of organization you are trying to build, or policy level, what kind of HR policies you would like to have to empower at the, lowest level decision making capacity. So those are HR challenges of any organization for that matter. तो वो भी एक पार्ट है, वो बिल्कुल एक अलग नियोजन है वो अपना. But that stands completely true. Undoubtedly, that stands completely true, at least in India and developing countries. Yeah, most of the developing countries having this problem actually. It's not just in India. Yeah. So, and that's how it's actually evolved. That's how we learn things. That's what we try to share things. That's where rather than getting negative or hopelessness, we need to bring more hopefulness and positivity to the whole environment and the whole thing. So that's why we want, as at the beginning only I said, entrepreneur mindset is completely different from the rest of the crowd, and it will remain on a minority side. It will never become a majority. That's for sure. Entrepreneurs will not be the majority. They'll always be the minority, and it will be the fixed mindset people who will get associated with those growth mindset people and convert the a world a better place. That's how the vision goes on. Shakur Saab, I would also love कि director साहब कुछ बोले, and then we also. Yes. Simim, आप थोड़ा सा, क्योंकि let me share about her, very interesting fact with everyone. आपने भी जो जैकमा का एग्जांपल दिया ना, इंग्लिश टीचर, तो सिमी मैम इज प्राइमरीली एक्चुअली अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो शी इज द एचओडी ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट एज वेल. But the kind of enthusiasm she brought in and the kind of administration that जैसा आपने बहुत rightly कहा, decision making. So that's very crucial part which transform any individual to become a leader and and transform into entrepreneurship kind of thing. So Simi ma'am is also a classical example for all of us here. So at least we can improve English with her, huh? Definitely we can have that, and ma'am is a classical example here. How she is transformed over a period of time, and she went ahead to become a the PR head of the LG Delhi government as well. So which was again a tremendous kind of achievement, I would say. So, and we are lucky to have her now as a torch bearer for all of us within Jamia at least. So we are hopeful that definitely will be able to successfully build a ecosystem that will really help everyone and make more entrepreneurs than ever before Jamia has produced. Right. Yeah, I'm not very sure. I mean, I really feel like a fish out of the water. But very kind of you, Shakur Saab and Fahad Saab. But one can only do what one can. But what one is fortunate about is that in Jamia we have huge number of experts across different departments and centers in Jamia who are contributing to the building of the ecosystem of entrepreneurship and innovation and startup, and that's what our strength is. So the human resource that we have, and of course we have an enthusiastic lot of students who are actually interested in this field, and with experts like you and Fahad Saab and others, I'm sure we'll be able to build something good for our students, and that's our only objective here in the center. But what I would really urge you all is to probably hear the students, because I remember even in yesterday's session they were coming up with their own problems, and since both of you are in the field, probably if they pose their problems to you or if they pose their questions
questions to you and you were to engage with them and answer their queries, then they would benefit greatly from this session. Yeah, So, absolutely fine, ma'am, and that is what we were been doing, and we I don't know, gentleman who joined in and who shared his views. I assumed that he was actually a student, so because he was raising the hand, so I just thought to take the call. No, So I am not a student. I am assistant professor in MCARS. okay. Yeah, so I just had this thing in mind, and that is a real problem, which No I problem, no am problem, sir, no I problem. am facing this thing right now. Okay, But okay. anyway, Sir, Yeah, we you completely really empathize with you, sir, ah, and no, hope no, of but at least I that think your problems get yeah, solved. this environment of making coming into entrepreneurship or making the things done, it is very new in India. It is coming up, but we have to collectively we have to think Yes, that we'll be more okay, vocal, and things are that happening. at Things are that happening. level the freedom has to be given, has to absolutely. Yeah, be, that has to be, that is and something, sir. that I request you to, and sir, the put it in the right forum. See, this is again a kind of, yeah, as an entrepreneur, I would say, yeah, most that of the time, जैसे फास्ट साहब ने एग्जांपल दिया ना, hmm. सही जगह हथौड़ा मारना, तो this is absolutely not the नहीं, right हथौड़ा तो right आपको okay. जहां पर भी मौका मिलेगा वहां मारना है, नहीं वो वो ठीक है, but this is हर not the जगह right तो right नहीं। right वो audience. प्लेटफॉर्म सर, प्लेटफॉर्म में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। प्लेटफॉर्म्स तो इसी तरह से होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ तो खासकर हमारे देश में अगर आप यहाँ हथौड़ा मारोगे तो कहेंगे भैया ये सही जगह नहीं है, वहां मारो, तो वो इंसान हथौड़ा लेके घूमता रहता है और थक थका जाता है। चलिए, anyway, जहां पर wish you भी all the कोई, best, and we'll हमें नहीं definitely. मालूम है, जो भी सुन सके वो सुन ले, और अगर ये बात को हमें इसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व करना ही चाहिए। बिल्कुल Right. बिल्कुल, no, everything is being done, तभी everything is हम being बहुत done. सारी चीजों को, अब यहाँ पर इनोवेटर्स की कमी नहीं है, अच्छे दिमागों की कमी नहीं है, लेकिन वो So अच्छे can we, sir, ये take that opportunity and या without wasting time, let's hear out some good या mind या speaking. या Yes, तो among the thank you। students, I would request if anyone can come forward and just share their ideas one by one. So Fahad bhai, and we can see what kind of thing that we can do. Hello, anyone from the students? I can see a lot of students are there already. No one have any idea why they are here in this room today. It was supposed to be a workshop, I believe. I think we should start from the first person. Rishi or Zahir सी बात है, that is okay, लेकिन we have to break this ice. Yes. इन ब्रेकिंग सेशंस थोड़े से होने भी चाहिए। बोलेंगे तो दिल खुलेगा थोड़ा सा। बिल्कुल। I think that will maybe anyone who would like to, that's what I was trying to figure out, anyone who has that enough courage to just speak their mind, but that's very important. But if you speak your mind, courage, it will be difficult for them to succeed. So, Amir Khan, I believe he's also a student, right? So Amir Khan कौन है? Yes, Perfect. Hello. Yes, sir. Yes, Amir Khan sir. Sir, I have no idea, start a business idea right now. I'm just here to learn new things. Fair enough. Do you have any queries you would like to know? You want No, to sir. share anything? No, sir. Amir साहब, I think पता है when I was in the university, right? So जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, there was this workshop about discovering entrepreneurship, a fantastic workshop. और सबसे पहले जब उन्होंने रूम में बिठाया and they asked us to introduce, और सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो जितने लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और अपने बारे में बताया, उस इंस्टेंट पे, पहले इंस्टेंट पे पता चल रहा था कि कौन सा पर्सन कितने पानी के अंदर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? इट इज परफेक्टली ओके। तो कुछ लोग वोकल थे, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे अपने बारे में, लेकिन जब तक वर्कशॉप खत्म हुई, इट वाज अ वीक्स वर्कशॉप, एवरीवन वाज, अब उनसे जब लास्ट डे के अंदर उनसे पूछा गया उनके बारे में, तो एवरीवन वाज
completely opposite, बिल्कुल opposite हुआ था, और अपने बारे में खूब details, अपने बारे में खूब enthusiasm. There is a question came from one of the participant. Mr. Yalnaz Malik has asked how we can from fully science background can move to entrepreneurship. What can be the baby steps as a student? I think this is a good question and a very interesting question and very right question, I believe, at this forum. थोड़ा आप बता सकते हैं कि वो सजेशंस कि एक साइंस बैकग्राउंड के है अगर ये और ये एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं कि तो व्हाट आर द बेबी स्टेप्स एज अ स्टूडेंट? I always thought that you don't even require education to become an entrepreneur. Right. अगर आपने साइंस करा है तो आई थिंक यू आर ओवरली क्वालिफाइड. तो आपका दिमाग तो और ज्यादा खुला होना चाहिए एज कम्पेयर टू अ पर्सन फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम. इट्स ऑल अबाउट अ ग्रोथ माइंडसेट. और अगर आपके अंदर इफ यू हैव दैट इन यू to have that growth mindset, I think becoming an entrepreneur is not difficult. और साइंस साइड से होना तो और बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि you can look a lot into technical advancement. You understand what is actually happening. आज की तारीख के अंदर you have these artificial intelligence coming up. You have these new technology that is coming up. So if you are from the science side, I'm sure you have a inner depth of these things and you know it much better. So I think having a stream does not make a difference whether you are from science stream or you're from management stream or you're from art stream. If one is good at culinary sciences and has taken arts, I think they have a lot of things to do in that stream, whether it is the food technology sector or food sector or culinary sector or delivery sector. I mean, it's just about you and not about the stream that is actually matters. Yeah, and most importantly, I would like to add, Yilnaz, the thing is this कि जो हमारा जो इंडियन का जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस रहा है ना, वो ये रहा है कि जो माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं फाज साहब कि हमने आई डोंट नो इवन इट माइट गेट कनेक्टेड विथ यू एज वेल. आपने कहा मैं साइंस बैकग्राउंड हूँ, तो साइंस, डिड यू ऑप्टेड फॉर साइंस बाय योरसेल्फ और यू जस्ट चूज इट बिकॉज यू समवन सजेस्टेड दैट कि भाई साइंस लो. कैन यू जस्ट स्पीक अप? यस यलनाज. I choose it by myself, sir. You choose it by yourself. So that means you're already one step ahead of others. बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, अभी ऑफलेट थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन पहले ये तो था कि भाई अगर बच्चे मार्क्स 10th में आ गए हैं तो उन बच्चों को बाय डिफॉल्ट साइंस लेना होता था, कि उन्हें इंजीनियर बनना होता था या डॉक्टर बनना होता था. Yalnaz, what stream have you taken? What have you done your graduation from? Sorry, sir. आपने कौन से स्ट्रीम से किया है? Sir, I am currently from biomedical sciences. Right. Wow. So that's one of the emerging factor. आपने being a lady and in that field, how many of you know about the lady Kiran Majumdar Shaw? नाम सुना है आपने? Kiran Majumdar Shaw? No, sir. She is suppose the Biocon company का नाम सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. $1 billion company है. हाँ, तो बायोकॉन इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी एंड बायोकॉन जो है वो उसकी फाउंडर है वो किरण मजुमदार शॉ. राइट. She's a very dynamic lady. I think you should do a little this thing, read about her. I think that will help. बहुत अच्छा. आपका जो जर्नी है ना वो इंडिया की बता रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने आपको बाहर का एग्जांपल नहीं दिया है. आप ही का फील्ड के इंडिया से ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ के ऑलरेडी एक बिलियन कंपनी में कन्वर्ट कर चुकी है वो अपने विजन को. तो आप किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन जो कंपनी है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ मेक्का फॉर बायोटेक पीपल, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी में अगर कोई भी कुछ कर रहा है फॉर देम बायोकॉन इज लाइक मेक्का. और लकीली वो हमारे इंडिया में है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. तो माय सजेशन वुड बी एज यू हैव ऑप्टेड साइंस विद योर ओन चॉइस, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग इन साइंस. So आप उसको देखिए, उसको स्टडी कीजिए, and I'm sure you will learn lot of things and lot of things will open up. Baby steps यही है. Baby steps में सबसे पहले कि getting a role model.
And Yes, you, sir. Currently, I am following Namita Thapar. She is the And CEO of. No, yes, is yes. the one uh, Namita Thapar? sir. She is the CEO and co-founder of MKO company. Yes, Right yes. now, I'm like reading about her. But I'm sir a little bit confused because my stream is from biomedical sciences. It is not having much scope in India, but I want it to be like having a good scope in India only. So that's why I asked this question. Fair अच्छा. enough. I think आप किरण मजूमदार शो को पढ़ना शुरू कीजिए. You will definitely get inspired enough, and you'll see the way out also. इंडिया में ही रह के. हाँ, I definitely. Okay. ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां से स्टार्टअप आइडिया उसको बिल्कुल सॉल्व बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका इसीलिए बेबी सिटिंग में सबसे पहले कि आप अगर देखोगे ना, when she started, because I eventually I feel fortunate for many of things, everything that I have in life. किरण मजूमदार शॉप की जो जो इनिशियल जर्नी है, एंड द लेडी, another lady was there with her from the very initial stage. Her name is Arpita Sengupta. Eventually she was my client, and she was very more than a client, become a family with me, a brother sister relation we had. And she is right now in Mumbai. She was there as the PR head of Biocon in Bangalore. So that time I had the chance to know that organization very closely, and how they do that, and passion they bring in. उस टाइम में इंडिया में उतना वो फील्ड सेक्टर था ही नहीं. बायोकॉन जिस विजन के साथ स्टार्ट किया था किरण मजूमदार ने, दैट टाइम इंडिया में स्कोप ही नहीं था. तो इवेंचुअली इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उनको पढ़ो, तो यू विल गेट टू नो कि इंडिया में स्कोप नहीं था, तो व्हाट दे डिड, इंडिया में रह के उन्होंने ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया. हाँ, अगर आपके अंदर पैशन है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, और बिना पैशन के वो कुछ नहीं कर सकता, एक जुनून है, तो इट्स अ पेशेंस, परसिवियरनेस, एंड परसिवियरनेस इज द बेटर वर्ड आई बिलीव. yes, पैशन के साथ साथ अगर आपका परसिवियरेंस नहीं है, तो देन आप शायद फिर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. right. परसिवियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I think we should go back to Amir. और यस, आई थिंक आमिर ने तो शायद बात अपनी रखी दी है कि he is here to learn few things and learn new things. तो I hope with lot of people being in line up, तो उनके आगे भी I think we can have get back to Amir always, and he is free to raise hand anytime. So Ananta is there. I think she is there with us next. So Ananta, is there anything that you want to discuss here? Hello, so I am basically doing my PG diploma from Jamia Millia Islamia in entrepreneurship and innovation, and my startup idea is basically on modifying clothing. I have discussed it before as well. yes, Yeah, I The think only we thing had is in our last session. Okay. So did you made any yeah, progress? Did you made any progress, or you want to figure out any problem that you want to discuss today for everybody's so enlightenment? actually, like last time as well, I asked about like where to begin with, right? So it's basically that I have everything in my mind, but then again, I am a bit lost at from where should I be starting all the process. But हाँ अभी market research and reviews से मैं शुरू कर रही हूँ, but then again, I'm a bit lost with the all the questions and all the strategies that I should be coming up with, which is like getting a little hang of me. So I'm like a bit lost here and there. Like I get motivated and then I'm like, कि हो नहीं पा रहा, how am I supposed to do this? Because I really want to work it out, and I'm like really hoping that sometimes it's like I'm so sorry, but it's like. I just really need a little direction, so you can tell me, ki, okay, you can start from here, so that I can really focus on that particular thing, and then I can move it to the next. Namta, I rarely open my LinkedIn profile, right? And Yeah, sir. yesterday I finally opened it, maybe after a year or something, and I haven't even made it. I just made an account maybe a few years back. Or there was this one girl who actually finally traced me, and I think it's quite difficult to trace me on that. And I think you were the one, right? Yes, sir. So you know how to go about it. So you finally
You finally sent me the invite and I accepted it. Similarly, you found your way out, right? You had to connect to someone and you connected. Fantastic, right? Yes, thank you so much. Right. Yeah, I So, just want So to. it's just that I sometimes I know that if I'm willing to do something or if I want to do something, yes, sir, you saying something? yeah, so जैसे आपको ideas हैं, as I told you earlier, जो ideas होते हैं ना, they don't come out fully formed. You have an idea and then you start working on it. They start becoming more clearer and clearer when you work on them, right? So the most important thing that you get started on it. जब आपने उसको start कर ही लिया है, and I just wanted to share that as a जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, राइट? जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, और शकूर साहब इज ऑलवेज देयर, एंड अगर आपने उसके आइडियाज को आपने जॉट डाउन कर लिया है एंड व्हाट यू रियली वांट टू डू, वेदर इट इज क्लोथिंग, जैसे आपने पिछली बार भी डिस्कस कर लिया था, एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज. I think फाद साहब थोड़ा सा इनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अनंता, आई थिंक इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन जो आइडिया को और क्लैरिटी रिफाइन करने के लिए, जो अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस का अगर बिहेवियर और जो उनका पैटर्न है ना ऑब्जर्वेंस, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा स्टडी करो, आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन रिफाइनिंग योर आइडिया मच फास्टर देन एनीथिंग एल्स. क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज द एंड यूजर हु विल मेक इट अ सक्सेस और अ फेलियर. नो नथिंग एल्स, नो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. तो आप अगर अपने एंड यूजर्स के बारे में जितना समझ सकते हो और जितना आप उनको ऑन पेपर में ला सकते हो, that will be actually make it a more better strategic entrepreneurship startup than anything else. Anamta, is it the thought that कि कैसे start करूं, or is it the clarity of the idea that you want to impose? What is it about? No, it's not about the clarity of the idea. It's just that cases start good. Like I get it that there's a lot of risk that we have in business, right? Right. And without risk, there is like business cannot be done without the risk. You have to take it by hook or the crook. Absolutely. And so it's just that I get a little nervous that I don't, like of course, Abdul Shakur sir is like my teacher, and I just feel like that I don't, disappoint my teachers or अपने बड़ों का कि okay, I did something and I just don't want to fail, even though I'm okay with it, but I want to make it work. So I get really nervous about it, and like if I won't be able to do it, so it just makes me really anxious. अनंता, पहले तो आप That's अपने fear of failure को खत्म करो, ठीक है? And it's not about falling down. It's about whether you're willing to stand back again or not. That will make it an entrepreneurship. Nothing else. गिरना तो सभी ने है भाई. जैसे मतलब ना, there is an old saying कि जो हॉर्स राइड करेंगे वही गिरेंगे, जो हॉर्स राइड ही नहीं करेगा वो गिरेगा कब? तो गिरना तो इस बात की प्रूव होगा ना कि that you have tried and you failed. Someone who has never failed is who never tried. yes, so फियर ऑफ फेलियर तो बिल्कुल खत्म कर दो आप. एंड ट्रस्ट मी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, गार्जियंस हो, मेंटर्स हो, टीचर्स हो, nobody is going to criticize you or leave you कि यार तुमसे कुछ नहीं होगा. Nobody is going to say this word to you as long as you are getting up again. गिरने के बाद अगर आप गिरे बैठे रहोगे तो शायद बोले सुनने को मिल सकता है. But if you get up again and you say, I know what mistake I did, this time I'll not do that mistake and I'll try again. Trust me, people will be more connected with you and be more standing with you rather than giving up on you. अच्छा, Anamta, tell me, कि let's say 5 years down the line, right? And you look back at your life. So what would be more satisfying, trying and failing or not trying at all? trying and failing. Absolutely. There goes your answer. ठीक बात. अच्छा, आई थिंक कपल ऑफ क्वेश्चंस फास्ट सब आए हैं बच्चों की तरफ से. तो एक वनिया मलिक जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर यू इन द बिगिनिंग टॉक्ड अबाउट गेटिंग अ जॉब, so I wanted to ask that getting a job is what you are talking to first collect some money for the start, or it meant something else? I think ये Which one? I don't know, maybe थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हुआ है. वो जो हमने शुरू में मैंने बोला था ना कि भाई जॉब सीकर्स एंड जॉब गिवर्स वाली बात, आई थिंक उसमें थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन हो रहा है. वनिया, इज इट राइट? यही पॉइंट था आपका?
No, sir, actually, what you said in the beginning, that first you get a job for yourself, हाँ, right, right? right. Job for yourself Mhm. does not mean नौकरी. नौकरी की बात नहीं हो रही है. Job means work. You have to first get yourself engaged, and what you are doing, what you can do, what are the tasks of the organization that you can take care of by yourself, rather than getting and looking for people to come and get the job done. मैं उस काम की बात कर रहा हूँ. A self-employed person. Self-employed person. So you have to become a self-employed person first, right? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, उस काम का मार्केट वैल्यू भी देखोगे, आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने रेम्यूनरेशन भी रखोगे. विद द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे. इट इज नॉट लाइक कि आप अपने आप को पे कर रहे हो, या इट इज ऑलवेज द पेमेंट शुड कम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन टू यू, not directly from your one pocket to the other pocket. I meant that actually. Okay, thank you, sir. So that's how the organization becomes a brand, as soon as you take that approach. तो अच्छा, अब ये तपनजीत ने, आई थिंक फास्ट साहब एक और आया है. तपनजीत इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु सेड, सर currently I have an idea of another type of payment method for transport rather than cash UPI. Like currently we have only option UPI, cash for local transport payment option. I want to add another method for payment which is quite easy for all. Tapanjit, can you just elaborate it and open up? Yeah. अगर ऐसा है then it sounds interesting. It sounds very interesting. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening. सर, मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा पेमेंट मेथड लाऊंगा जो कि एक मेट्रो कार्ड की तरह होगा. हम कहीं भी अगर ऑटो या कहीं भी चढ़े, हम सिर्फ उस कार्ड को टच करें और हम उस ऑटो या किसी भी ट्रांसपोर्ट में बैठ सकते हैं. और हम जब उतरें तो हमें कैश देने की जरूरत ना हो, सिर्फ हम उस कार्ड को सटाएं और उतर जाए, उसकी पेमेंट ऑलरेडी कट जाए, जिससे ना ही हमें कैश की दिक्कत हो, यूपीआई की हो. सेकेंडली, जो चीज़ बहुत इशू होती है यूपीआई में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने क्यूआर कोड दिया और हमारा नेट काम नहीं कर रहा है. तो इस केस में हमें सिर्फ कार्ड की जरूरत है. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगी उनके पास नेट होगा जो कि कनेक्टेड होगा. हमें सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट करनी है, नॉर्मल टच करने के साथ. तो ये मेरा नॉर्मली कॉन्सेप्ट था सर. Tapan, have you ever been to, or anyone of you have ever been to Hong Kong? नो सर. Okay. हांगकांग के अंदर आई थिंक अब ये चीजें तो अब आ गई हैं, लेकिन एवर सिंस मेरे ख्याल से 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, दे हैव दिस ऑक्टोपस कार्ड, OCTOPUS, octopus card, and it is very much same what idea. Ookla News, please mute yourself. Ookla News Network, can you please mute yourself? आपकी आवाज आ रही है. Yes, Faji. So Hong Kong के अंदर they have always been using, and it is a super hit system. They use this octopus card, and it is usually used for traveling. वहाँ पे मेट्रो के अंदर, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अंदर, वहाँ पे हर जगह पे ये कार्ड चलता है. And it is very much same idea what Tapan is talking about. I think it's a fantastic idea. You must study about the octopus card that they have in Hong Kong, if that is what you are talking about, and it is on the same pattern. और बहुत अच्छा है ये, और easy to use भी है. Yeah, it is more like, I believe, जो इंडिया में जो मुझे लगता है, जो अभी जो अगर आप बात कर रहे हो, जो मेट्रो कार्ड है, अगर आप देखोगे दिल्ली में या कलकत्ता में, एवरी मेट्रो सिटी हैव दैट मेट्रो कार्ड. तो मेट्रो कार्ड जो है वो आप किसी भी रूट में किसी भी आगे जाओ, आने जाना होता है, तो इट बिकम्स जस्ट वन रिचार्ज. यू मेक इट एंड कीप दैट कार्ड विद यू. But is it used on the buses also? Yes, that's what I'm saying. But it is not being used in buses and all. So Tapanjit, मेरा जो सजेशन होगा ना, इन्वेंशन एंड इनोवेशन का डिफरेंस को समझना है. तो आप इनोवेशन की तरफ अगर दिमाग लगाओगे एज एंटरप्रेन्योर, तो आई थिंक यू विल गेट मोर सक्सेस मच फास्टर rather than inventing things. तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि startup is all about collaboration. It is not about trying to do everything by yourself. So don't waste your time in reinventing the wheel. If the wheel is already there, try to design the vehicle where the wheel can get fit in. Right? So that is always a smart move. तो जैसे फास्ट साहब ने बोला ये, तो as a case study you can have that Hong Kong octopus card that you can have, and parallelly you can think of the metro card which is already there in most of the metro cities, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, anywhere the metro is running. So that there can be some integration that you can just add up, with the buses and all other transports and everything. So anything that can, I'm just giving an idea, but I think it is you who have to dig the thing and figure it out. So Octopus definitely is a case study you should look forward to and try to connect with your idea. Or India में क्योंकि already one of the transport is already having a card.
So, if you can just integrate something and bring it, so that would be, I think, make it much faster. Because like I saw in a credit card time, if you look at why I'm saying this, कि अगर आपने ऑफलेट देखा होगा कि जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं कि दे टाई अप्स विथ मल्टीपल थिंग्स, जैसे कुछ कार्ड है जो इंडियन ऑयल कार्ड, सिटी कार्ड, and you have got future card, big bazaar card, and all those things with the banks and all. So anywhere you go and you can use that card, you get bonus points and all those. There's so many angles to it actually. So similarly, if you can just think something like that with an existing metro card only, so maybe you can have a good prototype very fast. Yes, sir. Chalo, anyone who is next? Ankit Sharma. Ankit, are you there? Hello, Ankit. Okay, Ashna Siddiqui. Fatima. Hello, Fatima, are you there? Yes, sir. Yeah, can you share something? Sir, I don't have any idea currently, It's but not I'm about here the to idea. learn. You might have a problem to discuss. Fatima, I No, think, sir, no answers yet. I'm just learning new things here okay, from your experience. I think Fatima, tell us about yourself First, you please introduce yourself. and what you like. Sir, I have completed my bachelor's from physics and my MSc physics. Now I'm pursuing MTech in nanotechnology. Oh, wow. You are pursuing what, sorry? MTech in nanotechnology. Oh. Fatima, I think maybe something bigger is waiting for you, I would say, because nanotechnology is something, with the kind of development that is happening in and around the whole world, in every aspect of our life. Yes. It's the tremendous potential you have. The only thing is that, you just need to figure out a right kind of problem statement, which is which bothers you. Just think about that and try to apply your nanotechnology into that, solving that problem. I think that will be a tremendous way to go forward, because you already have a lot of qualifications and knowledge already gathered about that field, right? Yes, sir. कोई भी जो मतलब डोंट थिंक अबाउट कि वो टेक्नोलॉजिकल है नहीं है, साइंस है नहीं है, सोशल है क्या है, figure out a real problem statement, and which is already there, a problem. Then with that statement, write it down and then try to apply your knowledge and think of how to solve it out. I think that will be a tremendous way to go forward. Fasab? Yes, I'm trying to. I'm looking into that direction, but as yet I think what you can do now, you can go log into the government problem statements as well. Already they have Startup India challenges going on. A lot of challenges being circulated from the IIC-Jamia as well. You can figure it out. There are domains that are problem statements, areas of work which does need nanotechnological solutions. There are many I am aware of. So you can just explore those competitions and all. I think that will be a tremendous way to go forward and take off early, I would suggest. Yes, sir. What's up? Thank you so much, sir. जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, I think Fatima, if you have any idea या फिर you want to pursue your तो उसके हिसाब से आपको अपना फील्ड को मूव करना चाहिए. If you are really looking forward towards innovation, towards any startups, then I think आप उसको शेयर कर लें. And if you want to continue your education. सर, जब मैं नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखती हूँ तो उसमें काफ़ी रिसर्च हो रही है. लाइक वो लोग नैनो रोबोट्स की तरफ रिसर्च कर रहे हैं कि हम ह्यूमन बॉडीज के अंदर ऐसे रोबोट्स डाल सकें जो कि खुद ही बीमारी डिटेक्ट कर सकें. ऐसी मेडिसिन नैनो रोबोट्स की जगह के थ्रू हम बॉडी के अंदर डाल सकें जो कि स्पेसिफिक एरिया पर काम करें. लाइक एंटीबायोटिक्स जब वो बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो पूरे बॉडी पे हमारे हार्म भी करती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो वहां ना जाके उन स्पेसिफिक एरियाज पर जाएं जहां जरूरत है. उस तरह टेक्सटाइल में भी काफी रिसर्च हो रही है अभी, लाइक सेल्फ हीलिंग टेक्सटाइल्स. उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी सेल्फ हीलिंग स्ट्रक्चर्स,
या फिर अपने आप ऐसे वो डिटेक्ट कर लें पहले, ऐसे सेंसर्स जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है हम स्टार्टिंग में ही उसे फिल कर दें, कहीं पे कोई पेंट अगर खराब हो रहा है या कहीं कोई जंग लग रहा है, ऐसी चीजें इस राइट। तरह का काफी रिसर्च चल रही है अभी नैनो में। बट थोड़े दिन पहले सर थोड़े दिन पहले देयर वाज दिस, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, दिस कार कंपनी, आई कैन नॉट रिकॉल विच कार कंपनी इज इट। तो उसके अंदर दे डिड एन एक्सीडेंट, और टेस्ला उन्होंने, सर। और उसके अंदर वो वापस उसी शेप में आ गया। एंड अगेन द क्लोथिंग फ्रंट, they did waterproof clothing on cotton, waterproof nanotechnology coating. तो ऐसी यस, डिफरेंट चीजें आ रही हैं। एब्सोल्युटली देयर इज अ लॉट ऑफ, I think Maz was telling something. क्या कह रहे हो Maz? सर ये पूछ रहा हूँ, ये टेस्ला तो नहीं थी जो गाड़ी की कंपनी की बात हो रही है सर? नहीं नहीं नहीं, इट वाजंट। नहीं, it's not Tesla. It's not Tesla. Ananta is raising hand. Ananta, you want to ask something? Yes, Ananta sir. was. Sir, I was asking that how many ideas should an individual have? I mean, we all have so many ideas. Hello, sir, can you hear me? Yes. Hello. Yes, Yes, sir. Ananta. So Yes, Ananta, my you're question audible. was, how many ideas should one individual have? So I wanted to ask that we all have so many ideas, sorry, but किस idea पे ज़्यादा focus करें? We don't really know about it. So it's like you want to work on two ideas, but we cannot work on two ideas all together, right? Right. So what should we do? So yeah, to work on this one particular idea, or how can we do it? But if I think फाज साहब आप थोड़ा सा कुछ अगर बताएं। हाँ, मेरे ख्याल से तो आइडियाज की लिमिट ही नहीं होती। और That's why मुझे थोड़ी सी ना चाहते हुए मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। brain is And a, it's so good to see अनंता की आपकी इनोसेंस है, and this is what we Namta, needed. it's a, absolutely, sir. we all have a beautiful mind with the beautiful ideas and beautiful thinking. नहीं, I'm very happy about it कि आपके sir, अंदर Sequencing होनी चाहिए। देखो फाज साहब, मुझे जो लगता है ना अनंता जो exactly, sir. That's what I was saying. trying to figure out the sequencing part. तो Yeah. sequencing की तो देखो ये है कि there are two way of looking at it. One is the जी फाज साहब आप कुछ बता रहे हैं? I was going back on that question. Sir, your voice is Yes, cracking. Yes, please. Anamta, I was going back on the question that you raised. जैसे आपके, जाहिर सी बात है, एक आदमी है या कोई एक इंडिविजुअल है या कोई लेडी है, और एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर आइडियाज आते रहते हैं, दे कीप ऑन कमिंग एंड कमिंग। तो द बेस्ट मेथड व्हाट पीपल डू इज, जहाँ पे आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, यू राइट डाउन दोज आइडियाज। फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, फेथ इन योर आइडिया, कि आपको कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा उसके अंदर स्कोप है। तीसरा, आपको अपना आइडिया को वैलिडेट करना कि ये आइडिया में, जब आपने उसके अंदर शॉर्टलिस्ट कर लिया अपने आइडियाज़, तो उसको वैलिडेट करना कि कौन से आइडियाज़ आप सोचते हैं कि बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छे सोचने के बाद आप उसको वैलिडेट करें कि ठीक है, इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वीकनेसेस ये हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, इसकी थ्रेट्स ये हैं, इसके एंट्री बैरियर्स ये हैं, इसके 5 P's के ऊपर वर्क किया ये है, इसका लोगों के ऊपर एम्फेसाइज किया ये है, इसकी सेगमेंट्स ये हैं, इसके अंदर इतना स्कोप है, ऑल दोज थिंग्स दैट यू डू लिटिल ऑफ मार्केट रिसर्च। तो आपको आइडिया वैलिडेट किया, लेकिन आइडियाज आते रहेंगे, बट यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ ऑन द आइडिया दैट यू रियली बिलीव विल वर्क आउट, राइट। जैसे आप क्लोथिंग के ऊपर वर्क कर रही हैं, एंड दैट इज़ वेरी नाइस, यू हैव अ आइडिया कि मुझे इसके अंदर काम करना है और मैं इसी के अंदर कुछ ना कुछ करूँगी, तो ठीक है। अब उसके अंदर आपने जब अपना सेगमेंट चूज कर लिया, देन यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट आइडिया एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग, थिंग्स विल ओपन, पाथ्स विल ओपन, और चैलेंजेस विल बी ओवरकम्ड इंशाल्लाह। तो डोंट वरी अबाउट द आइडियाज कमिंग, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। जितने आइडियाज आ रहे हैं, दिमाग घिसेगा नहीं, ये बात पक्की है। इनफैक्ट इट विल गेट नहीं, इनफैक्ट वी आर ह्यूमन माइंड। आपको पता है, एक छोटी सी बात बताता हूँ, दिमाग की बात कहने से एक याद आ गया। कल ही मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो हमारा जो बॉडी है कि व्हेन यू सिंक, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन की हमारी चैलेंजेस की बात चल रही थी रियल टाइम, तो उसमें ये हुआ कि भाई क्या आइडियाज की भी बात चल रही थी कि भाई कैसे यार इसको कैसे सॉर्ट आउट करे, एंड क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं, क्या व्हाट आर द वेज आउट, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, एंड ऑल दोज थिंग्स।
तो उसमें एक हुआ है कि मैंने कहा भाई समटाइम यू जस्ट नीड टू लेट योर बॉडी फ्लो फर्स्ट, पहले आप सिंक ना करो, पहले वो सर्वाइविंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू, कि पहले आप सर्वाइव करो, सर्वाइव करोगे ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम अप। तो सर्वाइवल का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, तो अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, बॉडी वेट एंड ऑल दोस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता ये चला कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो बाय डिफॉल्ट इट कैन फ्लोट इफ यू कैन जस्ट कट योर माइंड, एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने ब्रेन को अगर आप कट कर देते हो ना ह्यूमन बॉडी से, हमारी बॉडी बाय डिफॉल्ट फ्लोट कर सकते हैं, हमारे आइडियाज बाय डिफॉल्ट फ्लोट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, आप समझ रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जब आप सर्वाइवल के लिए आप करते हो, और सबसे मेन चीज है कि इफ यू फॉलो योर पैशन, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब आप पैशन को फॉलो करोगे rather than chasing, because कोई भी काम छोटा नहीं है, and every work is bound to generate some result, right? तो अब कितना आगे जाओगे, it will depend on your passion to it, the energy you bring into that idea, that will actually set the course for you. Nothing else will be decided. That is the only way to look forward as an entrepreneur. You follow your passion. आपने सजमेंट ले लिया, जैसे फास्ट साहब ने कहा, बहुत राइटली सेट कि भाई आपने सजमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब एक डोमेन चूज कर लिया कि ठीक है, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू वर्क, नाउ ब्रिंग ऑल योर पैशन एंड एनर्जी टू इट, go for full throttle without any fear of failure. Even if you fail, trust me, you will definitely overcome them in the next attempt in the same segment, same way. You're bound to get with better strategies. So giving up is definitely not a solution to it, entrepreneurship mein, and you go for it. That's how I think you should be doing it. And shortlisting, there are two way of looking at कि भाई एक तो है कि भाई which is more profitable, you can think in that direction, or you can think the other way कि which is more scalable. So both the way you can filter your ideas about that segment. Maz is raising hand. Maz, you want to ask something? Yes, sir. I want to ask. Thank you. Yes, please. Sir, in the last session, we have this this person. I forgot the name of the madam, and she was from She Connect, and she said that we help entrepreneurs. So there are other organizations as well, on other people who say we are entrepreneurs and we help other entrepreneurs. So are they, sir, really entrepreneurs or are they consultants? It's very difficult to say. I think it's very शिराज साहब, आप थोड़ा सा बता सकेंगे ये कौन से इसके लिए बता रहे हैं, कौन से मैडम की बात कर रहे हैं? I think शालिनी मैम नाम, रागिनी? नहीं सर, लास्ट सेशन था, शी कनेक्ट से ज्वाइन थी सर। सी कनेक्ट। बट Maz, let me tell you something. Yes, sir. की डेट के अंदर, whether it is a consultant or an entrepreneur who's ready to support other entrepreneur, or there's a lot of definitely a lot of scope. आज की तारीख के अंदर काफ़ी corporates के अंदर, medium size corporate companies, large size corporate companies, they have a separate fund for startups. It is just the right idea that needs to be clicked with them. I have several friends who are investing in startups. I have several friends who are investing in a startup. I have invested in a startup. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसल्टेंट है, नहीं करती। कंसल्टेंट है, आई एम श्योर she could be fantastic in getting you connected with other entrepreneurs who are ready to invest money in your startup. True. So yeah, I agree. It's an ecosystem that is evolving quite fast in India. तो Maz, as I always said कि भाई आपका जो है ना कि what is your energy you're bringing into, and what problem statement you're identifying, and how you are going to solve it, that those clarity if you have, and I think then you can always get people coming forward to you and letting you take your journey forward. So Mr. Muhammad Anas, he's asking, I think he is raised in his hand. Muhammad Anas? Hello, sir. Yes. Sir, am I talking to Abdul Shakur, sir? Yeah. Yes, sir. Sir, मुझे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में सर थोड़ा वो और आपसे सर कंसल्ट करना था कि सर प्रिजर्वेटिव्स कैसे प्रोसेसिंग के बाद, फूड प्रोसेसिंग के बाद प्रिजर्वेटिव्स के कैसे यूज और कहाँ से एक्वायर करना, कुछ मैं टेस्ट करना चाह रहा था।
कुछ फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो पहले सर थोड़ा सा उसके लिए अपना मैं थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे अपने बारे में, so that you know we सर can. yeah sir, I am Mohammad Anas. I did my BTech in civil engineering from NIT Bhopal. Okay. And then I started an NGO which work on and off. And then presently I am doing MTech in structural engineering from Jamia Millia Islamia. Okay, excellent. So yes, yeah. तो ये अचानक ये फूड वाला कनेक्शन कहाँ से आया, प्रोसेसिंग वाला? सर हम और कुछ हमारे फ्रेंड्स मिलके ये एक गवर्नमेंट की स्कीम चलती है अपेडा, तो ये अपेडा, यस सर, तो इसी के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट के लिए कुछ फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाह रहे थे। तो उसके लिए स्टेबलाइज और उसके लिए मतलब थोड़ा सा हम लोग रिसर्च कर रहे थे, उसी में से आपके अगर इनपुट्स मिल जाते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। फूड इज समथिंग जो अगर आप देखोगे ना कि ह्यूमन नीड्स के इर्द गिर्द, अगर आप सराउंडिंग टू ह्यूमन नीड्स अगर आप कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ला रहे हो ना, देयर आर चांसेस आर वेरी हाई that risk factor becomes quite lower. The competition is high, but risk is much lower. There is a fact. That's why you see every now and then people are jumping into food businesses, right? Now coming back to this, what you're asking, let me, as आपने जैसे आपने बताया, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट एंगल से अगर आप चीजों को समझना चाह रहे हैं तो लेट मी टेल यू, प्रिजर्वेटिव्स को लेकर यू नो स्पेशली इन फूड सेगमेंट बहुत ज्यादा कंप्लायंस है। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Yes, sir. Otherwise आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो फर्स्ट माय compliance of the international export compliance as well as the Indian standard compliance। FSSAI की जो आपकी गाइडलाइंस हैं उनको आप देखो, अच्छे से रिगरसली फॉलो करो, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि यू हैव टू यू नो गो आउट एंड सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, नॉट रिक्वायर्ड। आपको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कंप्लायंस है प्रिजर्वेटिव्स को लेकर, जो भी पर्टिकुलर फूड आप प्रोसेस करना चाह रहे हो, तो उसको पहले आप फिगर आउट करो। वंस यू फिगर देम आउट कि कौन सा आपको करना है, लेट मी नो, I'll definitely connect you with the people who are industry players and who are already doing the right things। तो मेरे लिए भी easy हो जाएगा कि ठीक है, आपको मैं किससे कनेक्ट करूं। अभी अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं I'll be clueless कि मैं आपको किससे कनेक्ट करूं। अब्दुल शकूर साहब। Yes sir। Yes फार साहब। Anas, there is an institute in NIFTEM, National Institute of Food Technology and Management, and then there's a institute at Hamdard as well, which is by Dr. Zulfikar Saab. और अब वो I think he's gone to Aligarh, a perfect gentleman, so he could be very good, he could be of great help to you. Secondly, आपको जो अपने food product test कराने हैं, there are companies like Intertech, Bureau Veritas, और I think LGS। अगर आप इन companies पे जाएंगे, whatever test is required, they even do, Intertech even does DNA testing। तो हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस सर, अभी चली गई थी अभी सर। आप सर निफ्टेम के बारे में बता रहे थे। सॉरी, मैं निफ्टेम के आपको ये बता रहा था कि पूरा एक इंस्टीट्यूट है निफ्टेम के अंदर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे हमदर्द के अंदर भी एक है डॉक्टर जुल्फिकार साहब, हु इज नाउ शिफ्टेड टू अलीगढ़, हु इज हेडिंग फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एट अलीगढ़। अगेन अ परफेक्ट जेंटलमैन। अगर आपको टेस्टिंग करानी है कोई, तो ब्यूरो वेरिटास है, इंटरटेक है, एसजीएस है दिल्ली के अंदर, और ये सारी जितनी there are many actually, there are many साथ साहब, शकूर साहब, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। फाद साहब, साथ एक्चुअली आपको पता है कि जामिया की अपनी एक ओन बेकरी है। हाँ, मैं यही कहने वाला था अभी। उसके लिए हमने सर्टिफिकेशन भी ली है, आईएसओ भी लिया, और हम उसके आप कह सकते हैं टेस्टिंग भी कराई है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअली उसकी शेल्फ लाइफ की हमने टेस्ट वगैरह कराए। शेल्फ लाइफ वगैरह जो टेस्ट आपके प्रिजर्वेटिव फूड इंडस्ट्री में एक्चुअली वेरी करेंगे कि आप बेवरेजेस में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले आप प्रोडक्ट को क्लियर करो कि भाई व्हाट प्रोडक्ट एग्जैक्टली। आप एक काम ये कर सकते हैं, आप सीआई के ऑफिस आ जाइएगा, डिटेल में बात कर लेंगे, देन आपको करेक्ट कर देंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले कंप्लायंस देख लो कि आप कौन से प्रोडक्ट को लेके डील करने जा रहे हो। उस प्रोडक्ट में जब आप कर लोगे ना, आपको स्पेसिफिकली हम इंडस्ट्री प्लेयर से एग्जैक्ट डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट करा देंगे। दैट्स नॉट अ बिग। और अपेटा से भी डायरेक्ट हमारा है, मेरा पर्सनली मैं बहुत क्लोज हूं अपेटा में। बिल्कुल बिल्कुल। और अन्ना आपको कोई भी इंटरनेशनल टेस्टिंग करवानी हो, देन दीस पीपल आर वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वही है कि देखना चाहता था कि
किस किस प्रिजर्वेटिव से हम कितना अचीव कर सकते हैं। वो एक्चुअली डिपेंड करेगा ना, देखो प्रिजर्वेटिव्स का जो मामला है ना, आप किस कंट्री में कर रहे हैं और कहाँ पर कौन से प्रिजर्वेटिव लीगलाइज्ड है, इतना ये लीगल वेरी करेगा, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, और फूड इंडस्ट्री में जितनी वेरिएंट्स है ना उस पर वेरी करेगा। वो सेम नहीं है, देयर इज नो वन पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव दैट इज यूज्ड बीइंग अक्रॉस द चैनल, ऐसा नहीं है। मैं उसी चीज को बता रहा था, प्रोडक्ट की जो इंटरनल जो हमारी, क्योंकि ऑलरेडी आई एम इनटू दैट, तो वो चीजें हमें मालूम है। तो जो रहा सवाल जो सप्लायर्स है, हो सकता है कि वो रेडिली जो अगर वंस यू आइडेंटिफाई ना कि भाई आपको कौन सी कंट्री में करना है, कौन से प्रोडक्ट को करना है, तो जो उसकी कंप्लायंस है वो अगर आप एक बार आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ कनेक्टिंग विद द राइट पीपल, दैट्स इट। तो आप अपना वो क्लैरिटी लेके जिस दिन भी आप चाहो यू कैन कम टू द सेंटर आल्सो, तो वी ऑल आर देयर। एक इसमें और क्वेश्चन होगा तुमसे साथ साहब कि आप इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन में जा रहे हैं या आपका अपना प्रोडक्शन यूनिट है, दिस इज आल्सो इशू। हाँ बिल्कुल उसकी भी चेंज हो जाएगी रिक्वायरमेंट। सर वैसे तो हाँ अभी तक के तो मतलब फर्स्ट पार्टी प्रोडक्शन के बारे में ही वो था। फेयर एनफ। तो वही मैं कह रहा हूँ, पहले आप प्रोडक्ट का वो क्लैरिटी ले लो, तो उसके बाद आई थिंक यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड। और नॉट ओनली दैट, आपको वो सप्लायर्स की भी हम आपको कनेक्ट करा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि वो रेडीली अवेलेबल है प्रिजर्वेटिव जो है, और वो हु आर द सप्लायर्स ऑन द विथ हु फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिजनेस एंड यू कैन गो अहेड विद देम। तो वो भी उसकी भी लिस्ट में हम आपको कनेक्ट करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं। सर आपने अभी एक नाम बताया था जो लैब टेस्ट करती हैं, सर उनका एक बार फिर से नाम बता देंगे। फार साहब बता रहे थे, फार साहब। इंटरटेक, ब्यूरो वेरिटास है, एसजीएस है, देयर आर सर्टेन बट अ फ्यू ऑफ देम। एसजीएस है सर, और सर इसके बाद इंटरटेक who heads हेलो टेक के अंदर मिस्टर मनोज है, who heads the food testing department. मिस्टर मनोज, yeah I think I don't know if he is still there, लेकिन सर मिस्टर मनोज कहाँ पर है? इंटरटेक, INTERTEK। यस सर, इंटरटेक में मिस्टर मनोज हैं जो टेस्टिंग हेड करते हैं। राइट। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि देर आर, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे ना, जैसे हमारी जो फैक्ट्री है यस सर, तो वो हमारा कासना एरिया में, वहाँ पर पीछे हमारे जो हम जो करवाते हैं वो देर ऑल्सो इंटरनेशनल नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हमारी रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है। तो हमारा क्योंकि डासना जो मसूरी जो आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना UPSIDC, तो हमारा उस वहीं पर है। तो हमारे फैक्ट्री के पीछे ही है उनका लैब ऑफिस, तो हमने उनके साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो देर आर लोकल पीपल आल्सो डूइंग प्योरली ऑन कमर्शियल बेसिस, तो वो लोग भी हैं कि देर आर पीपल। तो आप सारी चीज वही है, घूम फिर के आप प्रोडक्ट लाइन पहले क्लियर करो कि व्हाट इज द प्रोडक्ट सप्लाई। प्रोडक्ट वेरी करेगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर जाएगा, कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाएगा, तो वेरिएंट विल बी लिस्ट विल बी गो ऑन एंड ऑन। वो यस सर, मैं पढ़ा था, मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। तो आप टाइम को मैनेज करने का बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने क्या करना है, आप उसकी देखो और उसका एग्जैक्ट कौन कर रहा है, देन यू कैन गेट इट, फिल्टर इट आउट, एंड आई थिंक वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू इन द एग्जैक्ट पर्सन के साथ। आपको न्यूट्रिशन वैल्यू निकलवानी है, शेल्फ लाइफ की आपको करानी है, आपको कराना क्या है एक्चुअली, कराना क्या है, मतलब व्हाट टेस्ट यू वांट टू गेट इट डन फास्ट, और प्रिजर्वेटिव आपको क्यों चाहिए भाई, माइट बी अ प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ के लिए सर, कि भाई वही है ना। तो अब आप परमिटेबल शेल्फ लाइफ क्या है, उसके लिए आपको कंप्लायंस देखना है पहले। भाई लैब थोड़ी आपको कंप्लायंस बताएगा, लैब के पास जाओगे आप, वो कहेगा ठीक है टेस्ट करा लो। द मोमेंट यू आस्क देम द कंप्लायंस दे से वी डोंट नो। आप समझ रहे हो रियल बिजनेस जर्नी में जो होना है आपको, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसकी फिल्ट्रेशन, फर्स्ट फिल्ट्रेशन ये होना है कि भाई व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू सप्लाई, कौन सी कंट्री में करना चाह रहे हैं, उस कंट्री का लॉ क्या अलाउ करता है आपको, कौन से प्रिजर्वेटिव्स अलाउड, लिस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स क्या है, और इंडिया में क्योंकि आप इंडिया से करोगे तो इंडियन का आपको देखना ही देखना है बाय डिफॉल्ट। तो दीज आर द फिल्ट्रेशन कि अलाउड प्रिजर्वेटिव है क्या। तो अब उनको लिस्ट को लेके फिर उस लिस्ट में से फिर आप शॉर्टलिस्ट करोगे, देन दिस हंटिंग नीड टू बी डन कि भाई हाँ किससे ले, किससे ना ले, किससे करो। यस सर, राइट। अनस, एक फूड सेक्टर के अंदर एक बहुत आपने कभी फूड फॉर इंस्टेंस कोई फूड पैकेट्स देखे हैं, रेडी टू ईट फूड? यस सर, हाँ।
राइट। आप उसके पीछे अगर स्टडी करेंगे वेदर इट इज रेडी टू ईट फूड और इट इज लेट्स से बिस्किट्स और इट इज कन्फेक्शनरी, तो इट इज मार्केटेड बाय लेट्स से ब्रिटानिया, राइट, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय, एंड देन यू हैव अ डिफरेंट नेम। अगर आपने ये चीज अदर चीजों के अंदर आप शैम्पू भी यस सर, नोटिस करा है चीज। मैक्सिमम वही शिराज साहब वही पूछ रहे थे, मैं आपको करना है खुद मैन्युफैक्चर करना है। बताता हूँ कि आई मीन दैट इज फैंटास्टिक कि आप अपने ओन प्रोडक्शन लाइन लगाना चाहते हैं, लेकिन काफी जगहों पे जो ये चीजें होती हैं दोज आर आउटसोर्स। फॉर इंस्टेंस आपको परेशानी हो रही है काम शुरू करने में बिकॉज ऑफ सो मेनी टेस्टिंग्स दैट यू हैव टू फेस, राइट। आप जैसे शकूर साहब ने कहा, आप किसी के पास जाते हैं सप्लायर के पास और आप उससे आउटसोर्स करते हैं और उससे चीज लेते हैं, तो ही विल रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल गिव यू द सर्टिफिकेट दैट इज एब्सोल्युटली आपका काम इजी हो जाता है। आपका काम वहां पे इजी हो जाता है फॉर अ स्टार्टिंग फेज, एंड देन स्लोली you come up with your own production facility. As a startup it is always suggested, you know, तो क्योंकि वो आपका कोर फोकस होना चाहिए मार्केट को डेवलप करना, फॉर इंस्टेंस में आपको एंड यूजर करना है, तो क्योंकि वहां पर मेजर फोकस चाहिए होता है। आप फॉर इंस्टेंस जेलेटिन करने जा रहे हैं, राइट, जब आप मेंशन करेंगे जेलेटिन फॉर इंस्टेंस अपने प्रोडक्ट के अंदर, और वो जेलेटिन आपकी है लेट्स से इंस्टेड ऑफ एनिमल डेरिवेटिव इट इज फ्रॉम अ प्लांट डेरिवेटिव, राइट, तो आपको एक वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसके अंदर विच शोज दैट नो एनिमल फैट और इज यूज्ड इन दैट, राइट, तो आपको फिर वहां पे चाहिए होगा। और अगर आप इसी का शॉर्टकट लेंगे, देयर आर डीलर्स इन बंगाल, देयर आर डीलर्स इन वेरियस स्टेट्स हु दिस वेज जेलेटिन, फिश बेस्ड जेलेटिन और प्लांट बेस्ड जेलेटिन, एंड दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट। तो आप जब अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो सर्टिफिकेट वुड वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क, डेफिनेटली वर्क। तो अपनी प्रोडक्शन लाइन डेफिनेटली इज गुड, लेकिन जस्ट टू एक्सेलरेट योर वर्क ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। यस सर। चलो, आई थिंक एनीवन एल्स, आई थिंक टाइम सर आपको रीच आउट करने के लिए सर Anas sir, I am very much approachable through the center. I am already a part of the IIC-Jamia as well as an expert in that. तो आप कभी भी आप सेंटर से कनेक्ट हो जाइए और वहां से आप कोई भी, मेरा ईमेल आईडीज एंड एवरीथिंग आर देयर ऑलरेडी, और यस सर आई एम अवेलेबल यू नो ऑन व्हाट्सएप डेफिनेटली, और लिंक्डइन वगैरह में भी है। मतलब द ओनली सोशल मीडिया दैट आई विजिट नॉट वेरी रेगुलरली बट एटलीस्ट मेरे ऐप मोबाइल में रहता है, वो लिंक्डइन का होता है, तो वीकली एक आध बार देख लेता हूँ। तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन ड्रॉप इन व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चिराग साहब आप इनको कनेक्ट करवा दीजिएगा थोड़ा, ठीक है? हाँ, तो आप जामिया के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए तो भाई सेंटर फॉर इनोवेशन इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो आई थिंक यू ऑल आर देयर इन द राइट हैंड्स, तो वी आर वेरी मच अप्रोचेबल, चाहे फाज साहब हो, मैं हूँ, देयर मेनी पीपल आर कमिंग टू इट, so we are very much connected with the center, and anything that you drop in the message in for any one of us, it will definitely reach us, तो वो आप बेफिक्र रहो, आप you can always connect through the center to us. So I think time is already, you know, is the main thing that is running against us always. So, and the most crucial resource that is not in abundance, though we take it for granted, is time. तो फाज साहब टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को आपके बिहाफ पे ये कॉन्फिडेंट मैसेज दे रहा हूँ कि ऑलरेडी फाज साहब है शेयर्ड हिज ईमेल आईडी विद अस, और जो हमने ऑलरेडी सेंटर में भी शेयर कर लिया है, तो you can always take those details from the center, and मैं चैट में भी लिख देता हूँ if I'm always approachable. yes. I might not get back to you ASAP, बहुत जल्दी हो सकता नहीं हूँ, but I will definitely get back. और yes, मैं अपना भी डाल देता हूँ आपको, आप लोग इस पे भी डाल सकते हो, ओके? तो यू कैन ड्रॉप मी एनी टाइम, इस मेल पे आप लोग डाल सकते हो, कोई भी मेल है तो यू कैन सेंड अ मेल, जस्ट वही है कि ट्राई टू बी स्पेसिफिक, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए रिप्लाई करना, ठीक है? आई थिंक शिराज साहब, आई थिंक सिमी मैम इज देयर,
Yeah, I'm very much there ओके listening to. ओके मैम आप बताइए मैम आई थिंक टाइम तो थोड़ा सा Yes, you both ओवर ही have हो been गया है. very generous, Shakur Saab and Fahad Saab, by giving so much time to the students and listening to them. And I really appreciate the fact that you made it interactive, because I think the students have to open up and they have to, share their ideas, whatever doubts, queries, questions, they have. And thank you so much for attending to that and being so generous by sharing your email IDs and being always there for students. We really, really appreciate it. And we're both indebted to you, to you also, Shakur Saab, and to Fahad Saab also. Really, really grateful. Thank you so नहीं Yeah, much. it नहीं has been our pleasure, ma'am. नहीं Yeah. नहीं, it is definitely an honor, or it's an ongoing process. Definitely many of the students are still left, or they have बहुत to सारे be. रह गए, बहुत सारे रह गए. आई थिंक कैंपस ओपन हो जाएगा तो फास्ट साहब एक फिजिकल वर्कशॉप होल डे काइंड ऑफ थिंग विल ट्राई टू मैनेज. Oh तो yes, उसमें आई थिंक दैट विल रियली हेल्प देम अ लॉट. तो और Certainly. आई एम श्योर जब थोड़ी सी वर्कशॉप्स और हो जाएंगी, देन द स्पीड एंड द रिवॉर्ड will definitely increase. एग्जैक्टली तो और रेगुलर मेंटरिंग एंड जो हैंड होल्डिंग है, जो रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर वी कैन फिल्टर देम आउट एंड वी कैन स्टार्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड पैरेलली. Right, right. Thank you so much. Thank you so much. And thank you to everybody else who joined in also. Thank you so much. We're really grateful. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you.